I welcome you, ma'am, on behalf of the School of Happiness of Ramanujan College, and I also once again welcome all the participants for today's session. Now, I request you, ma'am, to begin with the session. Thank you, Nia. Thank you very much. So let's start. So first of all, I will request you to introduce yourself. I will request you to introduce yourself. Good evening, everyone. Myself, Dr. Hari Kishni from Bharati College, and I'm taking commerce subjects. Okay. Uh, I think today the most rare thing which we have or which we don't have is the happiness. Rest of the things are available. We have money, we have time also, but happiness is something for which we have to search it out. So, thank you, everyone. All right. Any other one would like to address? Would like to introduce them? I will request any other one? My, Please. Please, ma'am. myself, Dr. Manjul Gupta. Hello. Hello, hello. You're audible, ma'am. Please go on. Yes, you are audible, ma'am. Please go on. Yes, myself, Dr. Manjul Gupta. I am a teacher educator in B.Ed College. I am teaching educational psychology, and spirituality is my one of the area of interest. I am practicing pranic healing since last 6-7 years, so that Great. I am here to know more. Nice to hear from your side, ma'am. Here, Thank I would like to comment on this particular part. Whenever we are talking about our own self, generally we are discussing about our name, our physical appearance. I'm so and so. I'm thin. I'm fat. I'm like they are talking about their physical appearance. Other than that, they are talking about their qualification, their designation, है ना? What the position they are having in the society. But apart from this, can we say something related to our own self, which is very much related with our true identity? Can we talk about it? Can you think what are those things? What are those points on which points we can talk about other than these things, other than our designation, our qualification, our positions, our name, our parents' name, I'm a son, I'm a daughter of this and this, whatever. Can we say something else about it? Ma'am, on these lines, I can say that I'm a quick decision maker, a problem solver, and always try to convert a difficult such situation in a simpler one. Very nice. So here we are discussing about the happiness. So have you ever seen a small child, a small baby, whether he's not talking about happiness or something like, rather he is happy itself. Wherever he is going, wherever he is communicating with others also, apart from their family members even, he would be happy. He would smile with them, he will play with them. So as per our human qualities are concerned, we can say we have lots and lots of human qualities. I'm sorry to say we are forgetting these qualities. These qualities are with us, and that's the reason people are finding happiness around. So I will take a small break in that. I will ask you to write about your. Uh, uh, you must be liking something, some of the human qualities you are liking. So just pen down those qualities. I will ask you to write down just 5 major human qualities. Which do you like the most? Just write it down. Just in 30 seconds, you can write. Please. This is not a test or something.
I just ask you to write down, pen down some of the human qualities which you like the most. Please. I hope you are done with that. Yes, ma'am. Yeah. So just write these 5 qualities in priority order. Are you getting my point? Okay. Suppose you have written something like, suppose you have written honesty, suppose you have written um, truthfulness. So suppose honesty is your priority. So write down those qualities in priority order. Just write it down. Done? Done, ma'am. Right. Just find it out whether you have those qualities in you or not. Don't answer me. You're not supposed to answer me on this part. Just tick it out. If you have those qualities, just tick it out. Honestly. Done? Right. Again, give the prior order. Done? Right. Good. So just what are these things? What we have done over here? See, we all are having two self. One is our ideal self. Another one is our real self. Ideal means the ideal qualities, whatever the ideal qualities we are liking, right? This become our ideal self. And another one, how we are reacting, whether we are carrying those qualities or not, all are consuming as a real self. So just let me ask you, honestly, let me ask you whether your all these qualities, whatever you have picked out, how many tick you are having? Honestly, out of 5 qualities, how many ticks you are having? Please answer my question. I'm just asking you, how many ticks you are having? Ma'am, I've ticked 4. All right, 4. And any other one? I will see in the chat box. Someone has written 4. Okay. Anyone else would like to answer this? How many ticks they are having? All right, all right. Can you think about it? Why we are discussing these things? क्या फर्क पड़ता है? Whether our ideal self is not as our real self, hardly matters. क्या फर्क पड़ता है? How it is bothering us and why it is bothering us. कोई फर्क पड़ता है इससे? ना चीजें तो हम बहुत सारी चीजें there are many things which are come under our ideal ones. कि ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी. But actually, if we are not like this, how it is bothering and why it is bothering? थोड़ा सा बताइए, please. मैम हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो हमने जो आइडियल सेल्फ है और जो एक्चुअल सेल्फ है तो कहीं ना कहीं हम खुद को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं.
वो आइडियल जो हम मान के चलते हैं कि हम में अगर ये हो तो हम शायद बेहतर कर सकते हैं. Hmm. तो maybe we are trying to move from imperfection to perfection. See, as such, when we are talking about perfection नाम की कोई चीज नहीं है. हमारे लिए जो आइडियल है ना, वो हमारे लिए परफेक्ट, हमारे लिए, मेरे लिए परफेक्ट है, आपके लिए कुछ और परफेक्ट है ना, किसी और के लिए कुछ और परफेक्ट है. So if we are moving towards that perfection as per our knowledge, as per our opinion, how it matters, it will enhance our confidence, it will enhance our self-esteem, isn't it? People are facing these things, they are not at all feeling confident enough. So if their ideal one is as their real one, है ना, वो जो अंदर से है वही वो बाहर है, कहीं उनको कुछ 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 पॉलिश नहीं करना पड़ता, कुछ है ना, कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ता. They are not wasting their energy in any kind of manipulation. So in this sense, they are saving their energy. They are saving their energy for their own development, isn't it? So this is a small exercise. We have done this. One more. I would like to address another one. Yeah, this. So we will discuss this also. We will talk about our own self. We will talk about there are certain areas which are come under our self. There is some fluctuation in the electricity, so I'm sitting in the dark. Don't mind it. Yeah, now it's okay. So here I will talk about. So there are 4 areas. Have you seen these 4 areas over there in the screen? There are 4 areas: open area, blind area, hidden area, and one is dark area also. So these 4 areas are the part of our own self, are part of our own personality. सभी में होता है, थोड़ा 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 सभी में होता है. We will discuss one. For instance, we will talk about open area. Open area means here you can see the heading also, known by self. In the side it is written known by others. So as per our open area is concerned, it is very much known by our own self. हमें भी पता होता है अपने बारे में, और दूसरों को भी पता होता है हमारे बारे में कि हम ऐसे 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 हैं. Known by self and known by others. It's an open area, right? But again, there are some other areas also. For instance, we will talk about this blind area. ऐसा भी कुछ area है which is unknown by self and known by others. हमें नहीं पता है अपने बारे में. We are not knowing about those qualities, but others can evaluate on the basis of our interaction with them. So they can talk about you are this, 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 this. You are like this, 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 this. And हमें लग रहा होता है अरे ऐसा भी है, अच्छा. Sometimes positive, sometimes negatives also. They are talking about आप तो ऐसे 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 हैं, और हमें लग रहा होता है अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में. ऐसा भी होता है कभी कभी. What do you think? Yes, ma'am, ऐसा हो जाता है. कई बार हमें अपने बारे में नहीं पता होता है, right? But through our behavior, through our interaction with others can easily evaluate on the basis of our gestures, on the basis of our body language, on the way we are talking to them. So easily they can easily understand the person is like this. It could be positive, negative, both sides even. So there are certain areas which are come under blind area because we are blind over here. We are not able to see those things. So it is named by blind things. So another is one more area is here is a hidden area.
which is known by self here. Upper heading is known by self, and the side heading is unknown by others. What are these areas? Please. Which is very much known by self. हमें पता है पर दूसरों को नहीं पता है. Deliberately we are hiding those things. कुछ हमारे अपने secrets हैं, कुछ हमारी अपनी privacy है. We don't want to share those things. Simple. We are hiding. Deliberately we are hiding those things from others. कि दूसरों को ना पता चले, है ना, ये चीजें हमारे बारे में ना पता चले. ऐसा भी होता है, कॉमन है, सभी के साथ होता है. And one more thing, in psychology we are discussing these things. Dark area. Generally जितने भी हमारे psychological disorders, abnormalities, है ना, etc. So all these things, this particular dark area is playing a very major role in these things. Right? So again, dark area, upper side it's written unknown by self and unknown by others. दोनों को ही नहीं पता है. ऐसा भी कुछ एरिया हो सकता है. And unconsciously it's playing a very major role in person's happiness also, overall well-being also, isn't it? So मैम लेकिन इस तरह के एरिया फिर पता कैसे चल रहे हैं, जब हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो पता क्या चले डार्क एरिया? मैम थोड़ा एक्सप्लेन करिए इस कॉन्सेप्ट को. जरूर करेंगे जी. इसमें क्या होता है, जनरली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर कॉन्शियसनेस, राइट, कॉन्शियसनेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस. Unconsciousness, Freud has spoken about a lot in this particular aspect. Unconscious. Generally क्या होता है, whenever we come across some kind of negative experience, किसी ने हमें डांट दिया, है ना, किसी ने हमें कुछ गलत बोल दिया, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव इंसिडेंट जहां पर हम रिएक्ट नहीं कर पाए, समझ रहे हो? Generally, when we are discussing about the small children, कुछ ऐसे लोग जो कि react नहीं कर पाते हैं. Suppose for instance, the small child is badly abused by a maths teacher. बहुत बुरी तरह से डांट दिया एक दिन उसको, है ना, you are hopeless, you are so and so, you will not do anything in life, है ना, मेरे से लिखवा लो, आप कुछ नहीं करोगे, वगैरह वगैरह वगैरह. What will happen? वो क्या होता है, धीरे धीरे आपके कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना. नाउ द चाइल्ड इज ग्रोन अप. अब वो बड़ा एडल्ट हो गया है. नाउ ही इज स्टडिंग इन कॉलेजेस आल्सो. तो क्या होगा, वो चीज जो कभी उसने फेस किया होगा, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाए. तो अनकॉन्शियस माइंड, अब आप पूछोगे कि कैसे हमें अफेक्ट करता है. सो कई बार क्या होता है, वो स्मॉल चाइल्ड कई बार तो वो डर जाते हैं. टीचर बोल रही है, जरूर कुछ ठीक बोल रही है ना, मे बी आई एम नॉट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और समथिंग लाइक. और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा अंदर अंदर बोलता है कि अच्छा ऐसा है, एक दिन मैं इसको बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन के दिखाऊंगा. आई विल शो दिस पर्टिकुलर लेडी व्हाट आई एम. अब वो मैथ्स लेता है ना, अपना बीएससी में भी मैथ्स लेता है, एमएससी करता है, पीएचडी करता है, वगैरह वगैरह वगैरह. Unconsciously he wanted to become a mathematician. अब वो उसको परस्यू कर रहा है, पर कहाँ से गवर्न हो रही है चीजें? अनकॉन्शियस माइंड से गवर्न हो रही है. राइट. So here we can say this, a dark area is playing a really very major role in our personality. But here we are not discussing the same. As such, we will discuss how we can enhance our open area. चारों एरियाज हैं, चारों एरियाज हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एंड वी हैव डिस्कस दिस वन. So can we do something to enhance our open area and to minimize our blind, hidden and dark area?
Can we do something about it so that we could be happy, we can be open, we can be we can have a open and liberated personality, we can welcome new things in our life open heartedly? Can we do something about it? मैम मैम जितना ब्लाइंड और हिडन एरिया को कम करते जाएंगे, डार्क एरिया तो समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन ब्लाइंड और हिडन को जितना कम करेंगे ओपन एरिया बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही है जी। एंड ऐसा भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करती हूँ, लेट मी सी, मैं कर सकती हूँ कि यस 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 इट्स मूविंग, सी हियर, सो लाइक दिस। अगर हम थोड़ा सा ऐसे करें और इसमें हमें पता चलेगा कि हमारा ब्लाइंड कम हो रहा है, इधर हिडन एरिया कम हो रहा है, एंड ऑटोमेटिकली डार्क भी कम हो रहा है। Isn't it? Have you seen this? यस मैम। If you are opening, if you are enlarging your open area, try to enlarge your open area, automatically ये जो डार्क साइड है ये अपने आप कम हो रहा है आपका। Isn't it? Now, अब ये पॉइंट आता है कि करें क्या, कैसे करें। सपोज दिस इज आवर ब्लाइंड एरिया, राइट, है ना। वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि कौन कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं या कौन कौन सी बैड क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज दोज थिंग्स। सो इसके लिए हम क्या करें, कैन वी डू समथिंग अबाउट फॉर द सेम? मैम अगर जो दूसरों की ओपिनियन है उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, एक्सेप्ट करें सही क्रिटिसिज्म को, उस पे इंट्रोस्पेक्शन करें कि अगर बार बार कोई बात लोग कह रहे हैं हमारे बारे में और हमको लगता है हम ऐसे नहीं है, लेकिन 2 3 4 लोग बार बार कह रहे हैं अगर, तो उस पे सोचा जाए और इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी करते हैं, है ना, और अगर लोग कुछ हमें कमेंट करते हैं या हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर कमेंट करते हैं, बिहेवियर के ऊपर कमेंट करते हैं, जनरली ना वी ट्राई टू इग्नोर इट। नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। रादर ऐसा करने से अगर हम ध्यान से उनकी बात को देखते हैं, अगर 2 4 और भी लोग इस तरह के, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुछ इस तरह के कमेंट आपको रेगुलर मिल रहे हैं, so we can think about it and we can think about it and we can improve it also, कि हो सकता है ये थोड़ा सा जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और हमें थोड़ा सा इसके बारे में देखना चाहिए। Isn't it? कई बार हमारे बिहेवियर से लग रहा होता है, हमारी आंखें लाल होती हैं, फेस लाल होता है ना, लोग बोलते हैं अरे आप गुस्से में हैं। नो, मैं तो गुस्से में नहीं हूँ। हमारी आवाज बोल रही होती है, हमारा बॉडी पोस्चर बोल रहा होता है, हमारे जेस्चर्स बोल रहे होते हैं, बट स्टिल वी ट्राई टू हाइड दोज थिंग्स। रादर इफ वी आर ओपन, है ना, अगर थोड़ा सा ओपन हो जाए हम उस एरिया में आकर के, कि हो सकता है दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग गुड फॉर अस, एंड देखते हैं इसको भी करके, तो अगर हम उनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो वी कैन इम्प्रूव इट। वेरी नाइस, वेरी गुड। अनदर इज अ हिडन एरिया, इसका क्या करें? There is, जो चीज हम दूसरों को बताना नहीं चाहते ऐसा बिहेवियर करें ही ना। पर कई बार हमारे अपने सीक्रेट्स भी होते हैं, नहीं बताना सीक्रेट्स में चाहते। नहीं, सीक्रेट्स में होते क्यों है? शायद जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है या जिनको रिकॉग्नाइज नहीं करे फैमिली सोसाइटी, अगर हमें लग रहा है कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं मन में डाउट है, गलत है, तो क्यों करें ऐसा? हाँ, देखिए एक और भी बात हो जाती है इसमें, मैं एक और भी बात कहूंगी कि कई बार कई चीजें सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती हैं, है ना। कई चीज सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में एक्सेप्टेबल है, हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उसको गलत सही नहीं कहूंगी कि वहां गलत है या हमारे यहाँ गलत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट देयर आर सम इंसिडेंसेस इन आवर लाइफ जो कि हम हाइड करते हैं बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन, है ना। वन थिंग आपने बहुत अच्छा कहा कि एक तरह से कई बार हम उन चीजों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम हाइड कर रहे हैं मीन्स समथिंग रॉन्ग,
राइट? तो वी कैन इम्प्रूव आवर ओन सेल्फ इफ वी आर, कुछ दिमाग में हाइड करने का आ रहा है, मीन्स कहीं गलत हो रहा है और मैं यही अपने आप को बचा लूं, वन थिंग। कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें आपके लिए सही है बट सोसाइटी के लिए सही नहीं है, बट आपको लगता है सही है और आप कर रहे हो, और जरूरी नहीं है कि आप हर एक को बताइए वो बात। फॉर इंस्टेंस अभी अभी रिसेंटली कुछ एक चीजें हमारे लॉ ने भी एक्सेप्ट की हैं, कुछ एक चीजें नई चीजें एक्सेप्ट की हैं जो पहले नहीं थी। सो हियर अगेन कई बार इस तरह की चीजें होती हैं लाइफ में, सो वी आर हाइडिंग दोज थिंग्स फ्रॉम अदर्स। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मैम हम आपकी इस बात से नहीं समझ पा रहे, जब लॉ ने एक्सेप्ट कर ली, आपको अच्छा लग रहा है, देन व्हाई शुड यू हाइड? लॉ ने अब एक्सेप्ट की, मैं वही बात बोल रही हूँ कि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी कई चीजें लॉ ने एक्सेप्ट नहीं की या आपकी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आपको लगता है कि दिस इज राइट। अंडरस्टैंड? एंड यस मैम। जनरली यू आर हाइडिंग दोज थिंग्स फ्रॉम अदर्स। आपको हम्म। लगता है वो चीजें सही हैं और आप अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करते हो, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इसलिए आप हाइड कर रहे हो। तो मैम इसको बट रहने अगेन दिया जाए ऐसे ही, इसको कम क्यों किया जाए फिर? कई बार ऐसा होता है कम इसलिए भी किया जाए क्योंकि कई बार वो चीजें आपको अंदर 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 कुछ कुछ चीजें है ना आपको परेशान भी करती हैं। करते करते आपकी एक आदत बन जाती है हाइड करने की। आपका ये जो हिडन एरिया है वो एनलार्ज होता चला जाता है। हिडन एरिया एनलार्ज हुआ तो डार्क अपने आप हो जाएगा, कहीं ना कहीं अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, isn't it? इसलिए यस बात मैम। कर रहे हैं। ओके ओके, तब मैम क्या अब किया जाए? आप बताइए ना क्या किया जाए, हम डिस्कस करते हैं। क्या किया जाए बताइए। मैम अपने क्लोज वन से थोड़ा शेयर कर लिया जाए, इसको डाइल्यूट कर लिया जाए। जो आपके बहुत रिलायबल है, कुछ ऐसा आपका क्लोज सर्किल हो, रिलेटिव्स का, फैमिली फ्रेंड्स का, जहां आप अपनी व्यू शेयर कर सके, तो उनके साथ शेयर कर लिया जाए, तो एक वो हिडन डार्क में कन्वर्ट नहीं होगा। एटलीस्ट आप अपना पॉइंट ऑफ ब्यूटीफुल। व्यू अपने क्लोज फ्रेंड्स में रख सकते हैं, फैमिली मेंबर्स में रख सकते हैं। कुछ गलत या ऐसा कुछ आप कर रहे हैं जो सोसाइटी में नहीं मान्य है, लेकिन आप अपने, जो आपको समझता है, आपकी परेशानियों को, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को उनके साथ शेयर कर ले, तो वो उतना एग्जैक्टली हिडन और डार्क नहीं रहेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल कम्युनिकेट कर ले। ब्यूटीफुल। ऐसा ही किया जा सकता है। कम से कम अगर अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो कई बार कई लोग डायरीज लिखते हैं, है ना? आप यस मैम। डायरीज मीन्स आप अपने आप से अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं। हम्म। तो जब आप शेयर करते हैं, व्हाई शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने अंदर भी तो रख सकते हैं डायरी ना लिख करके। कुछ फायदा होता है डायरीज लिखने का या दूसरों से शेयरिंग करने का? मैम कैथारसिस हो जाती है, आप पेंट अप वाली कंडीशन में नहीं आते, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होता, आप उसको पूरा प्लस माइनस प्रोस कौन सब लिखते हैं, कारण लिखते एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली तो वो चीज डाइल्यूट हो जाती है शायद। एग्जैक्टली। और ये कैथारसिस आपका वो जो डार्क एरिया है वो नहीं बनने देता है। आपका कैथार्स हुआ है ना, यू आर रिलीविंग योर पेंट अप ऑफ इमोशंस, स्पेशली द नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव सप्रेस्ड इमोशंस मैम। सप्रेस होएगा ही नहीं वो, फिर नीचे हम्म। जाएगा ही नहीं, अनकॉन्शियस बनेगा ही नहीं, डार्क एरिया बनेगा ही नहीं। इजंट इट? जितने यस। भी हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डार्क एरिया। So you can easily overcome your dark area by sharing. If आपको नहीं मिलता है कोई भी ऐसा आपका नियर बाय या क्लोज वन, तो आप अपने आप से भी शेयर कर सकते हो, बट एटलीस्ट शेयर, ट्राई मैम टू बात तो शेयर। मैम इससे कैसे आपका हिडन एरिया कम हो रहा है? डायरी लिखने से नोन टू यू तो है ही, आपने डायरी अपने साथ लिखी, तब भी बात नोन टू यू ही रही, नोन टू अदर्स तो नहीं हुई, तो हिडन कम कैसे हुआ? बट आपने उसको अपने कॉन्शियस तक ले आए। कभी आपने, आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, कभी आपने डायरीज लिखी है? नहीं मैम, नहीं लिखी। क्योंकि शायद आप में मेरे, से कोई और? आप में से नहीं। कोई और? Ma'am, नेहा can I जी? also? Yes, ma'am, I have written.
Ma'am, I written when I was in school. In school, the psychologist always asked to write diary. So at that time, we were kids, like we used to follow everything sincerely. So I used to write, but then as we grew up and we had more burden of work or workload, so we started thinking that it takes a lot of time because that time we used to have a lot of things. We still have a lot of things in our mind. So we keep writing, like it takes a lot of time. So the priorities change and we stopped writing. I stopped writing. So I want to ask you that as well, that how to prioritize this thing that, diary writing is a must, because I always have so many things, which I think writing of the same will be able to help me a lot because I've done it once in my lifetime when I was in school. So, but that doesn't come in my priority. Like other things rush into the mind Just and try to they share your take last. experience when you were in school, when you were writing your diaries. Just share your experience, especially the psychological experience. When we write our diary, so suppose we fought with somebody and we wrote the same in the diary, so we get a clear picture. We get rid of the chaos. We get a clear picture of whose fault is this and who should do what. Whether there is something which I should do, like saying sorry to somebody, or I should be more accommodative, or it was the other person's fault, and you also get relieved from that emotion from your mind, especially when you don't have anybody to share with. So Again, that's the case, like especially such emotions we get rid of. It doesn't like keep on going in our mind if we write it down in a diary. Also, ma'am, apart from this, I want to share one more thought that when we write diaries, we again start having the fear that okay, somebody should not read this, like our siblings or anybody else in the home shouldn't read that. So we used to buy that locked diaries in which there's a lock. So there are still that kind of diaries available, but again, the fear is still there that nobody should read that, and also the priority is exactly, not there. exactly. So it's been But good. Writing a diary has always been good. even in that, again, you are sharing yourself. Even you are sharing your own feelings to you. No. So again, it's a process of catharsis. You will catharsis out your negative emotions over there, even though there is some uh, Ma'am, my point of view is this. I know the importance of diary writing in catharsis. It is वेरी बेनिफिशियल मैम, लेकिन जहाँ ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिडन एरिया नोन बाय सेल्फ अननोन टू अदर्स, तो ये एरिया तो डायरी राइटिंग से कम नहीं हो रहा और बल्कि बढ़ रहा है. आपको डायरी पे ताला लगा के रखना पड़ रहा है. एक तो मिनट, एक हिडन मिनट. एरिया कैसे? यस मैम. हाँ, हाँ. जब हिडन एरिया का एक बहुत नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अंदर आपके कहीं ना कहीं, अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा कुछ ऐसा है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं. हिडन एरिया का एक माइनस पॉइंट है, कहीं ना कहीं यू आर रेजिंग अ फिंगर टू योर सेल्फ कि आपसे कुछ गलत हो रहा है. तो वो जब आप शेयर आउट करते हैं, किसी से भी करते हैं ना, क्लोज वन से करते हैं या अपने आप से करते हैं, तो वो वहां से चला जाता है. अंडरस्टैंड? कभी लगा ऐसा कुछ? नहीं स्पेशली मैम. आई विल आस्क नेहा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस which is very very private one and you have shared with your diary is a process of catharsis only. You will catharsis out your all pent up of emotions over there कि उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कहा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. Now finished. Yes, ma'am. It has happened. It has happened many times, ma'am, because I am like an outspoken person. So earlier I used to write, but now when I don't write, so I just take it out to my close ones, considering this fact that they'll understand it. And even if they don't, so they will give their arguments, then probably I'll be giving my arguments. Something else will come out of that. So I do share, and in most of the cases, I got rid of the emotions which you're talking about. Really. So Manjul ji, I hope the thing is clear to you also. मैम क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है. वो इंटेंसिटी को आपकी कम कर रहा है, हिडन एरिया की गिल्ट को कम कर रहा है, आपके इमोशंस जो है उनको रिलीज कर रहा है. लेकिन मैम स्टिल पॉइंट इज दिस कि हिडन एरिया तो जितना है उतना बना हुआ है, उसको डाइल्यूट भले ही कर दे रही है डायरी राइटिंग, लेकिन जब तक आप दूसरों से शेयर नहीं करेंगे तब तक हिडन एरिया तो कम नहीं हो रहा.
एक हिडन एरिया के साथ हमने बोला, एक आपके साथ एक नेगेटिव वाइब जुड़ी होती है। हाँ, उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे। हिडन एरिया के जो आपके शायद ये मैम इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, जो अपना इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इफेक्ट कम हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी में बहुत डाइल्यूट हो बड़ी चीज जाएगा हो मैम। जाती है ये, यस मैम, बहुत फायदा होगा। right? तो ओके, तभी थैंक यू मैम। any नहीं मैम, any other हाँ doubt if you have, you can share with us even. मैम, नहीं ठीक मैम, थैंक यू सो मच। So Neha ji, can you share your any experience with us? करना चाहोगे या फिर आप any Ma'am, of related to your diary writing? ma'am, the experiences which I wrote in any that. any experience कि जहाँ आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था और आपने डायरी लिखा, आपको रिलीफ हुआ? Any of your Yes, experience if you ma'am. would. Yes, ma'am. Actually, since I was a sincere student, so I was always doing good in my studies. I did in my practical classes also good, but when it was the day of the practical exam, I did everything wrong. I don't know why did I do that, but just happened that the answer came out to be wrong, and it was like a lengthy question for 25 marks. And the same teacher who used to be very loveful towards me, she scolded me a lot on that day of the examination because it was the final exam and it was the practical, and I did well in my earlier classes, but I did the question wrong. So she scolded me a lot that you're good for nothing, you couldn't do this. Earlier you did this, but now you're not remembering anything. So she scolded me a lot, and that was the first time that somebody had scolded me so much. So because I came back home, I cried so much. I didn't want to share it with my parents because generally parents get tensed because of two reasons. First is the marks, and then second is because of your own emotional state. So I wrote the experience in my diary, so it helped me. And later on, when I used to read it, so I used to think, as we all think, that oh, it was such a small thing. I could have been more focused towards my examination, and even if I did it wrong, I managed to pass the course. And the teacher was again, she again became loveful in my subsequent classes. So it was nothing but at that point of time, like we may think a lot of negative things and we can keep on crying and may do some wrong things or may think more wrong. So, but if you write down the same, then probably you get clarity or you get rid of the emotion also. You get engaged in writing. So that doesn't intensify in your mind. The emotion doesn't intensify in your mind. And also आप दूसरों को भी problem create करने से बच जाते हो. Suppose if I would have called somebody or if I would have cried in front of my parents, then that would have not exaggerated, but increased the situation. So just quietly writing the same reduce the intensity of the situation. So that helped me in managing the Even you thing. can easily So that maintain is your it. relationship also. Yes, ma'am, because yeah, we don't burst out on others or we don't say maybe the cause of bad mood is something else, but then we tend to generally, yes, end up in speaking rudely or arrogantly to others, or maybe by crying too much, or maybe by not doing the other things in a righteous manner. So yes, relationships, and yes, relationships is a strain these days. For example, जैसे वर्क होम बैलेंस बताते हैं तो उसमें कहते हैं कि ऑफिस का गुस्सा घर पे नहीं निकालना चाहिए or the frustration or the irritation or the other related things. So that ruins your personal relations definitely. Even your relation with yourself also gets strengthened by it, isn't it? Yes, ma'am, definitely. You're also Very right. carrying our relation with our own self. So again, with this kind of small exercises, we can easily enhance our relation, strengthen our relation with our own self, right? And again, it will enhance our open area, at least for our own self. No, दूसरों के लिए कितना नहीं वो दूसरी बात है, but at least you can enhance your open area for yourself. है ना, आप अपने से नहीं छिपा रहे हो, आप अपने से हाइड नहीं कर रहे हो चीजों को, as it is you are showing, है ना, in your diary or somewhere, like. And there are other ways also through that we can easily get rid of our pent up emotions. Can you quote out something, some activities or something? Generally, people are not able to manage their
एंगर और समथिंग, कुछ कुछ कर देते हैं गुस्से में, तोड़ फोड़ ये वो. कैन वी डू समथिंग? यस मैम, बहुत सी ऐसे सेशंस में देखा है, पिलो को मार रहे हैं कोई पर्सन समझ के, ब्लॉक्स तोड़ लिए, बना लिए, कुछ इस तरह का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बॉल प्रेस करना है, इस तरह की एक्सरसाइज कराई जाती है कुछ. बिल्कुल. एंड कई चीजें आर्टिस्टिक भी होती हैं. कभी आप देखो कि जो पेंटर्स हैं या पोएट्स हैं या राइटर्स हैं, what they are showing, basically all their performance are based on their some experiences, and especially the negative experiences. मैम And आजकल they, एक ड्राइंग में जेंटेंगल करके आर्ट चल रही है, उसमें भी हाँ जी, ड्राइंग कुछ जेंटेंगल करके कुछ ड्राइंग का एक पैटर्न चल रहा है कि जब आप स्ट्रेस्ड आउट है या फोकस नहीं कर पा रहे तो ड्रॉ करिए, तो उस समय पे वो शायद इसी को डेवलप किया गया है. I will let you know one of my experience. I was teacher educator at that time. I was teaching a B.Ed students. So उनको क्या करना पड़ता था, बहुत सारा हम लोग काम देते थे, है ना, ये करो, पोस्टर्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, एक्टिविटीज करो, दिस एंड दैट. तो क्या हुआ, one day one girl has shown me one photograph of गांधी जी. गांधी जी जनरली हम देखते हैं किसी भी उसका कोई भी उनका पोर्ट्रेट देखते हैं तो वो बहुत स्माइलिंग फेस उनका देखते हैं. वहां वो बहुत गुस्से में, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे वो गांधी जी गुस्से में. तो जस्ट आई आस्क्ड हर कि कब आपने बनाया ये. कहती रात को बैठ के 2 बजे मैम. तो 2 बजे मीन्स कि शी वाज इन क्वाइट पेनफुल टाइमिंग से गुजर रही थी वो पिच्ची, अपना सो नहीं पा रही थी, गुस्सा था कहीं ना कहीं. एंड इट कैन पोर्ट्रे ओवर देयर थ्रू दैट पर्टिकुलर पिक. सो वो चीजें अलग हो जाती हैं. साइकोलॉजी में हम इसको सब्लिमेशन का नाम देते हैं कि कई थ्रू आर्टिस्टिक एक्टिविटीज वी कैन इजीली गेट रिड ऑफ आर पेंट अप ऑफ इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस स्पेशली. चलो वो तो अलग बात है. But here we are talking about how we can get rid of our these blind, hidden and dark area. So through our discussion, we can easily understood this कि by sharing or by listening to others, blind area we can easily get rid by by listening to others, and hidden area we can easily get rid of by sharing with others or sharing with our own self also through diaries and all. So this is all about, and if you have any doubt you can ask, or if you are not comfortable with the talk also, even कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या it's not practically possible, so you can ask me also. कुछ भी if you have Ma'am, any doubt. हाँ. Then I want to ask and share two things. Then firstly, diary writing, like as I already said that, there's a fear that somebody could read the same in the family, though it doesn't happen, but yes, there's always a fear because many times we go through a lot of things mentally and we may end up writing that. So, so there's a fear that, somebody shouldn't read that, या आप हमेशा उसको लॉक You करके जाएं, or you always feel like carrying that along. So that's how to deal with that, because that if we do that, then these emotions shouldn't be there in the mind. nowadays the So how log to diaries deal are with it? available in the market, dear. You can easily buy Yes, those things. ma'am. Yes, ma'am. And They are. Yes, ma'am. They are. I bought one of those, but I don't know, ma'am. Like there's always a fear somebody can see the मैम lock, or maybe somebody maybe especially mothers, they can also do that. So मैम इसके I was लिए, just sharing that. yes, मैम yes, Anjal ji. हाँ मैम इसके लिए एक ये भी प्रोसेस हम लोग करते हैं कि जैसे आपने लिखा डायरी की तरह, आप पेज पे लिखिए, पूरा एक्सप्लेन करिए, उसको बाद जला दीजिए. बिल्कुल. हाँ, तो वो होता है कि कोई आपकी प्रोसेस है या कोई ऐसी है जिसको आप लिखना चाहते बाद में कोई पढ़े ना, आप उसको बिल्कुल. डिस्ट्रॉय कर दीजिए. बिल्कुल. तो डिस्पोज ऑफ उससे कर दीजिए, खत्म. हाँ, बट आपके अंदर का निकल गया, एक बार निकल गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो और मैं निकलना बहुत जरूरी है. एनर्जेटिकली माना जाता है कि वो चीज आपने खत्म भी कर दी, वो बिल्कुल. एनर्जी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो आपको रिलैक्स करता है.
वो कभी भी डार्क एरिया में नहीं जाएगी कभी भी। डार्क एरिया में नहीं जाएगी। यस मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर, बहुत सुनके Thank you अच्छा so very लगा। much. Ma'am, Any ma'am, हाँ one more हाँ small thing. हम्म, Ma'am, that like many a times people usually share things with friends because as we grow up, we start believing the concept of friendship and we start sharing things. So, but when we grow, when we grow more like with passing time, so this must have happened with many people that our friends we share something and they go and tell us the same thing to somebody else. So, so we also subconsciously start thinking that okay, I won't be telling such things to anybody, or I won't be sharing things with anybody. So there are many people doesn't share many things just because of his fear, or also many things are momentary. Suppose like if I'm not liking somebody at this point of time, so this is momentary हम्म, emotion, and you just speak it out in front of somebody, and the person is going to that person only and to somebody else and just repeating the same thing, and your emotion was momentary. The next moment or next day it's gone. You have nothing like very deep. It was just momentary. So such things also prevent us from sharing things with yes. people But again, you have to transparently. be so intelligent. You should choose your friends. No, you have to Yes, be ma'am. choosy in your. You have to be choosy in your by selecting your friends. So you should know to with whom you should share, or the person is genuine or not, or he or she will keep your things with him or not. So again, you have to Yes, be ma'am. intelligent enough. ऐसे नहीं कि हर एक के साथ शेयर करते चले गए और उसने फर्दर Yes, फर्दर ma'am. फर्दर कहानियां कहीं की कहीं, है ना? So you have to be Yes, intelligent ma'am. in that also. हर एक के साथ नहीं, कुछ Yes, ma'am. choosy ones, very very selective ones you can share with them. Yes, ma'am. And ma'am, one more thing that you were saying that sometimes people say two, three people saying the same statement or giving the same statement about us, and we should stop or think about that. So, ma'am, I think that also happens that many times you are right, but people keep telling you that you are not right. Then you start believing that also. Like as it happens with growing children, that they are good enough, they're sensitive, but then the parents are criticizing on something and teachers are criticizing on something, and sometimes even the friends of the child also start believing in that, even though the child was not like that. So that You should happens make like a cross check also, dear. There are many people around there who are giving negative comments on you because of some or the other reasons, because they are not comfortable with you. That's the reason they are giving negative comments. But again, you can cross check. No, yes, एक ने yes, कहा आपने ma'am, yes, मान लिया, ma'am. ऐसे कैसे possible? You need to cross check all these things कि really it Yes, happens with ma'am. me or not. कई बार कई लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, जेलेसी में भी बोल देते हैं कि you are this and that, ऐसा भी होता है. But again, Yes, we have to be alert and intelligent enough to evaluate all these things. Now we have to cross check whether other people are also saying the same thing or not, isn't it? yes, ma'am. Yes, ma'am, definitely. Right, yeah, ma'am. We should put back and talk. True. Any other Yes. doubt? That's all. That's all from my side, ma'am. Any other one? Or should we stop over here?